Good morning everyone, welcome to the session. Today we are going to cover 30th October CA. Before I move ahead, can you please confirm is the audio and video good? Let's start with the class. With the first segment, ESI Finance and Business News. So first of all, we have GST portal introduces facility to provide details for import of goods. तो GST portal जो है उसने एक facility launch की है. What is this facility? So basically now using this facility, जितने भी businesses हैं, they can make their entries about imports in the invoice management system under GST. तो एक नया section ऐड किया है import of goods. तो जितना भी इनका import है businesses का in the invoice management system वो यहाँ पर पूरा entry कर सकते हैं. So all those things related to imports can be maintained here. Import of goods section ऐड किया है in the invoice management system wherein the bill of entry filed by the taxpayer for import of goods including import from SEZ will be made available in the IMS for taking allowed action on individual BOE. Bill of entry क्या होता है? जब आप import करते हैं तो bill generate होता है bill of entry, है ना? और जब आप export करते हैं तो shipping bill होता है, right? Very good morning everyone. तो now that would be generated, एक single window हो जाएगा. That would facilitate जो भी आपने import किया है, अगर उस पे कोई remission मिलना है वो भी मिल जाएगा. So this is the thing, okay? Even remember इसमें आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन से जो इंपोर्ट किया है वो भी इंक्लूडेड होगा, यानी वो बिल ऑफ एंट्री भी आप यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं. आफ्टर दैट वी हैव पावर ग्रिड एंड तोशिबा अनवीलिंग इंडियाज फर्स्ट 220 किलोवोल्ट मोबाइल GIS सिस्टम. तो तोशिबा ने और पावर ग्रिड ने कोलैबोरेट करके पहला फर्स्ट of its kind indigenously manufactured 220 kilovolt mobile GIS system launch किया है. Mobile GIS अब बेसिकली ये मोबाइल है, ठीक है. ऑल्सो यहाँ पर it would be used as compact and highly reliable system for efficient high voltage power distribution. Particularly क्या होता है कि कई जगह ऐसी होती है जहां पर you cannot establish the proper infrastructure, है ना, क्योंकि space constraint होता है. तो वहां पर you can take this and power distribution में it would be helping. Okay, so Toshiba Transmission and Distribution Systems Private Limited has delivered this system to Power Grid. Toshiba ने Power Grid को ये deliver किया है. Then we have Nvidia becoming first $5 trillion company, surpassing India's GDP. So this is huge. Nvidia Corporation जो है, it has officially made history or created a history, becoming first company ever to reach $5 trillion market capitalization. First company ever to reach this amount of MCAP, a valuation that now exceeds India's entire GDP, estimated at around $4.2 trillion. All right, so this was about ESI Finance and Business News. Let's discuss regulatory news now. First of all, SEBI has set timelines for derivative rebalancing on Bank Nifty, Fin Nifty and Bankex. तो ये जो नॉन बेंचमार्क इंडाइसेस हैं इन पे SEBI ने कुछ डायरेक्शंस दिए हैं. It has directed that stock exchanges they need to implement revised eligibility criteria for derivatives on non-benchmark indices. जो नॉन बेंचमार्क इंडाइसेस हैं जैसे बैंक निफ्टी, बैंक एक्स, फिन निफ्टी, इन पे जो डेरिवेटिव्स ट्रेड होंगे उनके लिए कुछ क्राइटेरिया है,
उन्होंने बोला है कि रिवाइज्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको इम्प्लीमेंट करना है द स्टॉक एक्सचेंजेस. ओके, now what is the revised criteria? The regulator has mandated exchanges to comply with the prudential norms. आपको याद है मई 2025 के प्रूडेंशियल नॉर्म्स हमने कवर किए थे. इसमें हमने कवर किया था कि इंडिविजुअल स्टॉक का मैक्सिमम वेट कितना हो सकता है, टॉप 3 स्टॉक्स का मैक्सिमम वेट कितना हो सकता है, राइट, ऑल दीज थिंग्स. तो वही नॉर्म्स की बात यहाँ पर हो रही है. मिनिमम ऑफ 14 कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी आपके उस पोर्टफोलियो में एटलीस्ट 14 स्टॉक्स होने चाहिए. अ कैप ऑफ 20%, a cap of 20% on the top stocks weight, यानी जो भी टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक है उसका वेटेज 20% से ज्यादा नहीं हो सकता. एंड अ कंबाइंड कैप ऑफ 45% on the top 3 stocks. There's a combined cap of 45%. टॉप 3 परफॉर्मिंग स्टॉक्स का वेट 45% कंबाइंड, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, कंबाइनिंग ऑल दीज 3. ठीक है. सो दिस इज व्हाट दे हैव डायरेक्टेड दैट आपको मैंडेटरीली इंप्लीमेंट करना है. We have discussed this thing earlier as well. Then India's gold comes home. RBI moves more reserves from the global vaults. तो जितने भी हमारे global vaults में gold रखा हुआ था, RBI ने और उसको mobilize किया है, and we have repatriated it to our country back. So RBI has continued its steady repatriation of gold from foreign vaults. We have brought over 64 tons of precious metal back to India. And as of September 2025, we have discussed this thing earlier, that RBI's gold reserves, they have crossed, or they stood at 880 metric tons. 880 metric tons, according to the half-yearly report on management of forex. Okay. Of this total, 575.8 tons are now held in India, while 290.37 tons remain stored abroad within Bank of England, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट. आपको पता है फॉरेन एक्सचेंज में आपने पढ़ा होगा, फॉरेन एक्सचेंज में जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स होते हैं, फॉरेक्स रिजर्व्स के 4 कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, फॉरेन करेंसी एसेट्स, एसडीआर, गोल्ड एंड रिजर्व ट्रांसफर पोजीशन. फॉरेक्स रिजर्व जो होता है आपका, फॉरेक्स रिजर्व you have 4 components, right? Foreign currency assets, then you have gold, then you have SDR, and then you have RTP, reserve transfer position. अब SDR और RTP क्या है, ये हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में कर चुके हैं, IMF से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं. गोल्ड फॉरेन करेंसी तो आपको पता ही है, गोल्ड. अब ये जो गोल्ड है, ये फॉरेक्स रिजर्व आरबीआई कहाँ कहाँ एलोकेट कर सकता है, ठीक है, तो वो फॉरेन बैंक्स के साथ, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के साथ भी रख सकता है, इसलिए रखता है. सो दिस इज हाउ यू कैन इन्वेस्ट इट इज वेल. सो as a part of it, you see 575.8 tons तो अभी इंडिया में है, बाकी का 290.37 tons बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स में, इसलिए यहाँ पर है. यू मस्ट बी थिंकिंग कि यहाँ पर क्यों है, तो ये इट इज अलाउड. ओके, दैट्स व्हाई. Then next one is SEBI permits investment advisors to offer paid second opinion to client assets. पहले अलाउड नहीं था second opinion, that too on the pre-existing distribution arrangement. यानी investment advisors को as of now it was not allowed कि अगर pre-existing distribution arrangement है, that means what, if there is someone else जो भी आपका मैनेज कर रहा है, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है वो कोई और है, उस केस में यू वर नॉट अलाउड टू गिव अ सेकेंड ओपिनियन. ठीक है, बट अभी अलाउ किया है सेबी ने, बट इट हैज टू बी पेड, सो यू कैन चार्ज अ फीस. ओके, you can charge a fees for such second opinion. Earlier the investment advisors were not allowed to charge fees on such assets, मतलब आप fees भी नहीं charge कर सकते थे, अब आप charge कर सकते हैं. So now investment advisor can charge a fee of up to 2.5% annually for the asset value for providing a second opinion. अगर आप किसी को advisory दे रहे हैं, investment की advice दे रहे हैं, सेकेंड ओपिनियन दे रहे हैं, उसके लिए अप टू 2.5% एनुअली ऑफ द एसेट वैल्यू, जिस भी एसेट को मैनेज करने के लिए एडवाइस दे रहे हैं, उसका 2.5% एनुअली यू कैन चार्ज. However, such investment advisors are required to disclose and get annual consent from clients. आपको clients से annual consent लेना होगा. Okay? अभी तक क्या था, अभी तक इफ दोज एसेट्स वर इंक्लूडेड इन समवन एल्सेस
or they were managed by some another distributor, so you could not give a second opinion, but now it is allowed. You can charge it for it as well. Then banking segment की बात करते हैं. Banking segment में we have IRDAI imposing 1 crore rupees penalty on Liberty General Insurance. 1 crore rupees penalty, you know, huge amount. तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है आपका IRDAI ने इम्पोज किया है 1 crore rupees penalty on Liberty General Insurance Company and also cautioned it on violations of various norms. So basically it has violated certain norms pertaining to outsourcing, payment of commissions or remuneration of rewards to intermediaries. So that's why this much fine has been imposed. National news, we have Ford to set up first powertrain facility outside US. तो ऑटोमोबाइल मेजर है, ऑटोमोबाइल की मेजर कंपनी आपको पता है फोर्ड, तो यूएस ऑटो मेजर है फोर्ड. फोर्ड विल रिवाइव इट्स मलईनगर फैक्ट्री नियर चेन्नई. चेन्नई के पास इनकी ये फैक्ट्री है, इसको ये रिवाइव करेंगे बाय सेटिंग अप देयर फर्स्ट पावर ट्रेन फैसिलिटी. सो दिस इज गोइंग टू बी फर्स्ट आउटसाइड यूएस. ओके, पावर ट्रेन फैसिलिटी. और ये 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होगी, यानी एक्सपोर्ट पर्पस के लिए ही इसको सेटअप करेंगे. देन इंडिया कुड गेट ऑफिशियल कॉलर आईडी बाय मार्च 2026. तो ट्राई ने ये बोला है, जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ट्राई हैज अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू इंट्रोड्यूस अ कॉलर आईडी सिस्टम दैट विल पुल यूजर डिटेल्स डायरेक्टली फ्रॉम टेलीकॉम कंपनीज. अभी प्रपोज कर रहे हैं, यानी आपको किसी बीच में मर्चेंट एप्लीकेशन या बीच में आपको और किसी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी. सीधा कॉलर आईडी, सीधा कॉलर नेम जो है इट वुड बी रिफ्लेक्टेड. इस सिस्टम का नाम है कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन, CNAP, कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन. इसको अभी टेस्ट कर रहे हैं. 31 मार्च 2026 तक एक्सपेक्टेड है कि ये रोल आउट हो जाए. इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किसने आपको कॉल किया है. देन नेक्स्ट वी हैव इज इंडिया फेसिंग GDP loss of up to 24.7% by 2070 due to climate change. EU official sources ने ये बोला है that climate change की वजह से India could face a potential GDP loss up to 24.7% by 2070. Okay. अब since we are talking about this, so there's a related fact which says Ministry of Power has approved a 5400 crores viability gap funding scheme. वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम क्या होती है? वायबिलिटी गैप जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, ओके, तो इकोनॉमिक वायबिलिटी उनकी ना अफेक्ट हो, दे डू नॉट स्टॉल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड्स और ऑपरेशनल फंड्स, सो दे प्रोवाइड यू वायबिलिटी गैप फंडिंग. दे हैव अप्रूव्ड दिस मच फंडिंग फॉर 30 गीगावाट आवर्स ऑफ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम. और सोलर एनर्जी स्टॉल कैपेसिटी हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया कितना अचीव कर चुका है. Then state news. We have India's first sanctuary dedicated to the Indian wolves. This is first sanctuary dedicated to wolves. It is Mahua Dana Wolf Sanctuary. Remember, Mahua Dana Wolf Sanctuary located in Latehar district, Jharkhand. It is the only wildlife sanctuary in the country dedicated entirely to Indian grey wolf. Remember. After that, international news mein we have Grammarly changing its name to Superhuman. Grammarly ने अपने आप को rebrand किया है. It has changed its name to Superhuman. Okay, Grammarly आपको पता है AI tool है. Then next we have Secretary General of ASEAN has witnessed the handover, or the Secretary General of ASEAN has handed over 2026 ASEAN chairmanship from Malaysia to Philippines. So the ASEAN chairmanship has been transferred or has been handed over from Malaysia to Philippines during the closing ceremony of 47th ASEAN Summit in Kuala Lumpur, Malaysia.
आपको याद रखना है. So now the chairmanship is with Philippines. Philippines is going to be the chairperson from 1st of January 2026 under the theme Navigating Our Future Together. Navigating our future together. Then we have Bharat Earth Movers Limited BEML and Dredging Corporation of India Limited. They have signed an MOU. Dredging Corporation, dredging क्या होती है? Dredgers क्या होते हैं? जो आपका कोस्टल एरियाज पे मड होता है उसको क्लीन करते हैं, ये जो डिवाइसेस होती हैं, राइट, ड्रेजर्स. So here Bharat Earth Movers Limited has signed 3 MOUs with Dredging Corporation of India Limited. The agreement covers 3 key areas. Supply of indigenous spare parts for the existing dredger fleet. Dredger मैंने आपको बताया ये वो चीजें होती है, वो आपकी आप बोल सकते हैं कि इस तरीके के वेसल्स होते हैं जो मड क्लियर वगैरह करते हैं. तो supply of such indigenous parts of the existing dredger fleet, then long reach excavations and customized dredging equipments for reservoir desiltation and inland water development. Desiltation किया जा सके उसके लिए indigenous capacities develop करने के लिए BEML has collaborated with Dredging Corporation of India Limited. That is the MOU, which is important. Then defense segment की अगर हम बात करें, so we have India and US signing 10-year defense framework pact. India US ने sign किया है 10-year defense framework agreement at a meeting in Kuala Lumpur between the defense minister and his American counterpart Peter Hegseth. India US defense relationship आने वाले 10 years के लिए they have created a path. Reports. We have adaptation gap report running on MT published by UNEP. तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने लॉन्च की है रिपोर्ट अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2035 रनिंग ऑन एमटी. हियर developing countries will require between $310 billion and $365 billion annually by 2035 to adapt to climate change. तो कुछ चीजें इन्होंने हाईलाइट की है कि हम अगर we want to adapt to climate change, we would require this much of fund at least. Then the report also warns that the Glasgow Climate Pact goal to double up adaptation finance to $40 billion by 2025 will not be met unless there is an urgent turnaround in funding commitments. तो अभी जो climate funding commitments हैं, अगर वो बहुत जल्दी नहीं बढ़ते, तो we are not on a good path to achieve all these goals. और जो सपोर्ट है क्लाइमेट फंड से जो मिल रहा है ग्लोबली, हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया था, लाइक अडेप्टेशन फंड, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, ग्रीन क्लाइमेट फंड, it has grown to $920 million. So it grew to $920 million in 2024, which is an 86% increase over the previous 5 years average. पिछले 5 साल के एवरेज से 86% इंक्रीज है. So that's good. यानी ये जो फंड्स हैं ये बहुत ज़्यादा एक्टिवली सपोर्ट कर रहे हैं क्लाइमेट फाइनेंसिंग. Then books में we have Antim Din, Hindi translation of acclaimed novel The Last Day, written by Lithuanian-Ukrainian author Jaroslavas. Okay, it was released in collaboration with Embassy of Lithuania in New Delhi. This is in the news. Then after that, in the sports, we have India's 90th chess grandmaster. So Ilam Parthi AR has become India's 90th chess grandmaster. He belongs to Tamil Nadu. And in obituaries, we have Manuel Frederick, hockey player and Kerala's first Olympic medalist. He was. In important days, Rashtriya Ekta Divas, National Unity Day, observed on 31st October. You know that we observe it as the birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel. 150th birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel, the first deputy prime minister and the home minister of the country.
also known as the Iron Man of India. That's it for the CA discussion. Now from the last class, we have top 6 questions today. क्योंकि ज़्यादा न्यूज़ थी नहीं important, इसलिए top 6 MCQs हैं हमारे पास from the previous session. First question, tell me. The government has allocated a tariff rate quota for gold under the FTA between India and UAE. Under this agreement, India has agreed to import up to how many metric tons of gold annually from the UAE with a 1% tariff or duty concession under the tariff rate quota. Any answers? So the right answer here would be 200 metric tons. Option B. Then SEBI, in a consultation paper, has proposed a steep reduction in the permissible brokerage and transaction costs that can be charged to MF schemes from 12 basis points to how many basis points for cash market trades and from 5 basis points to 1 basis points for derivative transactions. So for cash market transactions, it has reduced it from 12 basis points to 12 basis points to 2 basis points. Option A would be correct. Then we have India's maritime sector is the backbone of the economy with over 95% of the nation's trade by volume moving through sea. India recently has launched, in regard to this, you have to tell me, India has recently launched green and digital shipping corridors with which of these two countries? अभी कल ही हमने डिस्कस किया था कि इन दो कंट्रीज के साथ इंडिया ने लॉन्च किया है. सो ग्रीन एंड डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर्स हमने रिसेंटली लॉन्च किया है विद विच टू कंट्रीज? These two countries are Singapore and Netherlands. Option C, Singapore and Netherlands. After that, India's total installed electricity capacity has crossed 500 gigawatts, reaching 500.89 gigawatts. Out of this, how much percentage constitutes the renewable energy capacity? इस total capacity में से renewable energy capacity कितना percentage है? It is 51%. Okay, 51%, and remaining 49% is the fossil fuel based energy capacity. Then at the 4th annual general meeting of the Mobile and Electronic Devices Export Promotion Council, which was in news, it was highlighted that India is now world's which number of largest smartphone exporter? So India's rank in terms of smartphone exports. India's rank in terms of smartphone exports. No, not first. It is not first. It is second or third, I think. Yeah, third. So third rank hai, first nahi hai. Okay. In terms of smartphone exports, remember, we are currently at third position globally. Last question for today. India's first ever International Union Cyclist International 2.0 stage cycling race mascot has been unveiled. The mascot is? What is the mascot?
yesterday we have discussed. The mascot is named as Indu, right? Option B is correct, Indu. And जब cycling की बात हो रही है, Pune is known for the cycles, okay, or the capital for cycling. So remember the mascot is Indu. So these are the questions for today. ज़्यादा questions आज नहीं है कल की session से, क्योंकि बहुत ज़्यादा important news नहीं थी. Okay. So that's it for CA discussion. Thank you so much for staying tuned. I will see you all in the next class on Monday now. Have a good day.